In just moments from now, Prime Minister Modi will be dedicating and inaugurating India's National War Memorial. It's a 40-acre memorial at the India Gate premises, famous all over the country and all over the world. These are live pictures coming to you from the site, and on your screen are scores of ex-servicemen and ex-servicewomen who've come to be part of what is truly a historic day. Let's just listen in and then I'll get you the latest. में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने दोस्तों को खोया होगा, जिन्होंने अपने बेटों को खोया होगा, और आज उन सबको राष्ट्रीय समर स्मारक के तौर पर एक अलग पहचान मिल रही है, जहां पर आज के बाद आम जनता जा सकेगी, उनके नामों को पढ़ सकेगी, उनके बारे में जान सकेगी और उन्हें शहादत के बाद एक नई पहचान देने की ये जो कोशिश भारत सरकार की ओर से हुई है, वो वाकई अपने आप में नायाब है. And these veterans will also go to the National War Memorial to remember the wars and to remember their fallen brethren. This is also a time to honor the Veer Naris, the valiant women who are the strength of the nation. They send their husbands and sons to war, knowing full well of the dangers that might besiege their loved ones. And when the sons don't return and they are left all alone, they fight the war of life bravely and with dignity. They also send their sons to the front in service of the nation and find strength in the pictures of their lost husbands and sons and in the letters that they might have written. In some regiments, it's a tradition for soldiers to write a letter and leave it with their commanding officer before a tough assault. Painful as it may be, it is the only way they can express their last wishes, for that's all they might get. Many a time, a soldier does not make it back home, but his words and emotion do give strength to the family and to their colleagues. यहाँ बहुत सारे ऐसे भी पूर्व सैनिक हैं जो अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इस कार्यक्रम में आए हैं, और वो बच्चे शायद इस अनुभव से देश के लिए कुछ. In just a very short while from now, the Prime Minister will be inaugurating the War Memorial, and like you've just heard from the commentary that's on right now on the ground, on your screens are veterans, military veterans from all three services who've assembled there. Many of them would know some of the names that are there among those honored, the thousands of names that stand honored in gold on this memorial. And their families. Men who fought wars for India, men who've made the supreme sacrifice, and men whose lives are represented by that eternal flame, the immortal unknown soldier who made the supreme sacrifice for India, for Indian security, for Indian freedom, and for world peace, as a matter of fact. The 40-acre memorial has taken a long time coming. There has been political indifference, there has been administrative apathy, there has been bureaucratic red tape, and finally it has happened. The government will shortly be inaugurating a memorial that every Indian has wanted. And even on a day like this, you cannot rule out the fact that there has been politics. Remember, this memorial is dedicated to the nation at a time when India is on the threshold of one of its most vicious election campaigns. And these are live pictures of Prime Minister Modi arriving with the Defence Minister welcoming him. Let's listen in. हम आपको बता दें कि ध्यानचंद स्टेडियम में पूर्व से नेशनल स्टेडियम में जा रहे हैं, जहां मंच बनाया गया है, और ये सभी पूर्व सैनिक प्रधानमंत्री के संबोधन के इंतजार में. सबसे पहले रक्षा मंत्री का संबोधन होगा और उसके बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री. In Brigadier V. Mahalingam right now, we're going to be joined by a panel of veterans over the next 2 hours, ladies and gentlemen, for this very special coverage. But I want to bring in Brigadier Mahalingam first on this. Brigadier sir, welcome. Honor to have you on our coverage today on what we can all agree is a historic day for India.
we finally get to say the thanks that India's heroes deserve. The Prime Minister has arrived there, Brigadier, to speak to this large congregation of ex-servicemen. Take us through what this interaction is going to be about. We know that it comes right before the elections. We know that it has been a very eventful 5 years as far as ex-servicemen is concerned. What do you foresee in this particular interaction, sir? See, first of all, I must tell you, since you brought in what we have gone through, this project was sort of projected by the three services in 1963. After that, nothing happened. Right away in 2006, the government of India at that point in time said that they would consider this. Yes. But the urban ministry, urban development ministry sort of turned it down. In 2012, when the 50 years of Chinese aggression was sort of celebrated at India Gate, the then Prime Minister announced that we will do it. And immediately following that came Sheila Dikshit, the then Chief Minister of Delhi, who said it can't be done because this is a heritage area, and so on and so forth. Therefore, this entire project, Narendra Modi promised this in 2014. So basically it was never a priority before this. Absolutely. 2014 Narendra Modi sort of projected it and he has got it inaugurated today. And if at all somebody can take credit for this project, I will solely and wholly sort of put it on the present government and Narendra Modi. So I'm coming back to you, Brigadier. You're saying that the credit for this has to go straight to the Prime Minister. Let's listen in. He's on stage. The heroes are there, the veterans are there. Let's listen in. राष्ट्र की रवानगी आज नेशनल स्टेडियम में दिखाई दे रही है। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। मैं गंगा की श्वास हूं, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूं, मैं देशभक्त की हूं ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं। काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूं। समस्त राज्यों का राष्ट्रीय सम्मान, पूर्व सैनिकों का सामूहिक वीरता बलिदान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं। माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय रक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, माननीय रक्षा राज्य मंत्री और यहाँ आए तमाम अग्रज पूर्व सैनिक जिन्होंने हमारे बीते हुए कल को सुंदर, समर्थ, सशक्त बनाया, शीर्ष सैन्य अधिकारी और कार्यक्रम से संलग्न तमाम सैनिकों का मैं कर्नल JK सिंह, स्वयं एक पूर्व सैनिक, आप सभी का सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्व सैनिक राष्ट्र जिन्हें बहुत सम्मान से देखता है, एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनते ही सर आदर से झुक जाता है, जो होठों पर आते ही हाथ अपने आप सैल्यूट के लिए उठ जाते हैं, एक ऐसा नाम जिसके लिए पूरे देश का हाथ प्रणाम की मुद्रा में उठ जाता है। तभी आज आपकी उपस्थिति और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से नेशनल स्टेडियम का तापमान दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों से कई डिग्री ज्यादा है। ये देश का हाथ प्रणाम की मुद्रा में उठ जाता है। तभी आज आपकी उपस्थिति और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से नेशनल स्टेडियम का तापमान दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों से कई डिग्री ज्यादा है। जब सरहद से आवाज उठती है तो फौजी के कदम अपने आप उठ जाते हैं।
क्योंकि सैनिक एक गीत है, वतन की प्रीत है, जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झांक तोले उन बिखरती बंकरों में आज दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। दुश्मन जिन खेतों में कल बारूद रखाए, उनमें अंगारों के वह नित बीज बोता है। मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। भारत का देशभक्त जनतंत्र है, पूर्व सैनिक वीरता का गूंजता एक मंत्र है। पूर्व सैनिक वंदना है, वीरता का मान है। पूर्व सैनिक राष्ट्र की धड़कन हमारी जान है। इसके रेशों में बना बलिदानियों का नाम है। ये बनारस की सुबह है, यह अवध की शाम है। Okay, so the defense minister is going to speak in a short while from now, and then finally there is going to be a speech and an address by the Prime Minister. All ears are going to be fixed on the Prime Minister's message. Remember, because these are peculiar times for the country, viewer. We are on the threshold of possible conflict with Pakistan. The Pulwama attack has just happened. The country is angry. There are elections ahead. There are some sections among ex-servicemen who believe that the current Modi administration has not been fair to ex-servicemen despite promises made during the 2014 election campaign. And yet today is this huge historic dedication. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.